तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I'm towards a peaceful society. How this in this material world there is always misery. If we turn to spirituality, if we turn ourselves to Krishna, then only we can experience this unending joy. Now in this society there are 4 divisions. So say 4 divisions विषय Prabhupada how they are created and how through that process one can attain perfection or attain Krishna consciousness being within this material world. The 4 divisions of human society were created by Sri Krishna in order to facilitate this process of elevation. Just as a student is elevated from a lower class to a postgraduate class, the divisions of labor, Chatur Varnam, are created to elevate us from lower stages of consciousness to highest stage of Krishna consciousness. This process is a process of cooperation. In the human body, it is Prabhupada बहुत एक बढ़िया example देवे हैं। प्रभात को जन जे 4टा डिवीजन अछि ह्यूमन सोसाइटी रे एवं कृष्ण एवडा बनै जंदी कोन पई ना ताकि वन बाय वन हम माने ग्रो करिबा आगु जिबा। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग अछि। कृष्ण 4th चैप्टर रे कहउछन जे ए 4टा डिवीजन्स मु निजे बनै छी ताकि मनीषा स्लोली प्रोग्रेस कर पारे। तो या माने या नु जे माने काकू नीचा देखौछु कि काकू हायर देखे कि ए भली माने सोसाइटी रे डिवीजन करछु नो। इटा हला अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जेमते जे जो क्लास रे अछि से सेही क्लास रे पढुछि ना। जे क्लास 1 स्टूडेंट से क्लास 1 रे जाई बसछि, जे क्लास 10 रे स्टूडेंट से क्लास 10 रे बसछि। ता माने ताको लेवल टा से ताको पाठटा से लेवल कॉन्शियसनेस टा से लेवल। तो प्रभुपाद कहते ता माने या नु जे क्लास 1 रे पढुछि कंप्लेन करिवो मते काई क्लास 1 रे बसेल मते काई क्लास 10 रे बसेल है ना। सिद्धू एंड कहते दिस प्रोसेस इज a process of cooperation. In the human body, most important part is the head, then the arms, the belly, and the legs. Although the head is considered to be the most important part, there is no question of neglecting the legs or any other part. A simple proper example is cooperation. Jadio head ta बहुत important part, हेले भी arms, belly, और legs ता तळे अछंती किंतु कि एमती कोन कहबो जे ठीक अछि हम लेग को नेग्लेक्ट कर दवा। हमें माने हमें हेड को केवल देखिबा लेग को देखिबानी सेंती करी हो ना। हम को लेग ता हमरो कोन खंडिया हेले हम ताऊ देखु ने ना हजार हजार टका खर्च करियो रेडी हो जाछ है ना। कोटी कोटी माने लाख लाख टका खर्च करियो काहे कि ना we know that this is a part of our body and this is essential. तार गोटे निजर काम रही तार गोटे निजर कार्य रही जोटा सी कर परिबो। जेमती हेड डिसिशंस नहीं पाउची लेग से भली हमको
गोटे जगह और जगह नहीं पाउछ लेग हमको वॉक करियर साहाଯ୍य करछि रन करियर साहाଯ୍य करछि तो ता माने या नुह जे हम लेग टाको छोट नीचा दृष्टि देखिबा ना दैट इज आल्सो एसेंशियल सो दैट इज सेटा ही कहउछन कोऑपरेशन similarly in the divisions of human society no one division is important to the exclusion of others एमती नुह जे बाकी मानु छाड़ दे केवल गोटे इंपोर्टेंट ना of these divisions the brahmanas are considered to be intellectual class of teachers the kshatriyas are administrative and military class the vaishyas are the mercantile and agricultural class and the sudras are the common laborer class तो ये चारटा डिवीजन जो होइची भगवत गीता रे डिटेल रे कहैची जे ये चारटा डिवीजन्स एई मानक बेसिस रे हिची ताको कार्यकलाप नै कि हिची ब्राह्मण माने जनरली जो माने वेद पाठ अध्ययन पढ़ांती यज्ञ करंती से माने को ब्राह्मण टीचर्स जो माने एवं क्षत्रियस में जो माने एडमिनिस्ट्रेटर्स बा लीडर्स से माने किंग रूलर्स और मिलिट्री क्लास आ वैश्यस जो माने मर्चेंटाइल और कृषि गोरक्षा वाणिज्य तो सेटा हला वैश्य आ शूद्र हला अन्य तीनटा जो रहिले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ताको असिस्ट करियो so in a properly run society all of these classes are required so ए पॉइंट हमको नोट करियो आमे एठी कहूने आमे एठी माने कास्ट कोन कहउछन जो ग्रुपिज्म करछे बा कास्टिज्म करछे नो आ माने कहउछे जे एवरी क्लास इज इंपोर्टेंट एवरी varna is important if they cooperate in their progress towards krishna consciousness there is no strife amongst them in the present social status we find that we are existing अच्छा माताजी कहउछन 37 पेज तो मु को दीटा पेज पूर्व को पळेली एटा पढी ने कहउछन एटा 37 टा पढी थिले ओके ताले माताजी ताले सेटा आपण पढी देबे आ एठो हमें कंटिन्यू कर दबा ना कोन गोटे पेज मिसे हला ठीक अछि in the present social status we find that we are existing in these 4 divisions but there is no cooperation everyone is dissatisfied today there is a great strife between the capitalist class and laborer class because between them there is no compromise there is only friction all this strife amongst the classes is due to the lack of krishna consciousness indeed there is not even a possibility of cooperation unless there is krishna consciousness से कहउछन जे प्रेजेंट सोशल स्टेटस रे कोन होची प्रेजेंट सोशल स्टेटस रे हमर केही भी सैटिस्फाइड न कारण कोऑपरेशन नाही ये भाउछन जे हम पड से भाउछन जे हम के मान नीचा देखउछन कैपिटलिस्ट क्लास लेबर क्लास भीतर सब बेले माने ए भली गोटे द्वंद्व रही थाउची ओनली फ्रिक्शन सेटा से कहउछन एंड ऑल दिस स्ट्राइफ इज ड्यू टू यार मूल कारण हला कृष्ण भक्तिर अभाव तो ये कोऑपरेशन टा करी हबो की हां करी हबो जदी हमें कृष्ण चेतनाशील हबा ए कृष्ण चेतनाशीलता केमती हे परिबा हमें सेट प्रोपर्टी कहबे krishna consciousness is absolutely essential for harmonizing all facets of human society
regardless of what class we belong to, if we cooperate in Krishna consciousness, there will be peace in the world. If we cooperate, तो सही में कहूँ जदि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस माने प्रैक्टिस पे हमें कोऑपरेट करिला जे कोनसे हमें क्लास रो होना कहीं ताहले जगत रे पीस आसियो जेमति जण को धर गोटे मंदिर रे विभिन्न प्रकार सेवा रही तो काहा को अर्चन करिया पडुची काहा को श्रृंगार करिया पडुची काहा को विग्रह को आरती करिया मिलुची काहा को कुकिंग करिया सेवा मिलुची काहा को मंदिर मार्जना करिया सेवा मिलुची काहा को कृष्ण कथा कहिबा सेवा मिलुची काहा को अन्य मैनेजमेंट जिनस देखिया सेवा मिलुची तो विभिन्न सेवा गुडी को केबे हेले भी हम भाबे था नै जे गोटे ऊपर अछि गोटे तळे ना सब गुडी को जदि हम कृष्ण को सेवा रूप रे ग्रहण करिवा बा ई भली हम कॉन्शियसनेस ता रहिबो ताहाले देयर विल बी पीस तो इफ वी कोऑपरेट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस माने ता मानेला से thus Krishna consciousness is utmost necessity for all divisions of society. Every chapter and every conclusion of the Bhagavad Gita aims towards Krishna consciousness. Sri Krishna, who is speaking Bhagavad Gita, is always stressing devotion to his personal self. Krishna को point stress करछन ना ए point पर ताको भक्ति करियो अनन्य भक्ति जेमति इंपोर्टेंट श्लोक हमर 18 चैप्टर अछि मन्मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में within always think of me become my devotee worship me and offer your homage unto me thus you will come to me without fail I promise you this because you are my dear friend that कहते मते पूजा करो मोर मते नमस्कार करो मते अर्पण करो मोर भक्त हो एबल कृष्ण डिमांड करछन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस टा केम सब बेले जरूरी एटसेट्रा तो एठी प्रॉफिट गोटे बहुत सुंदर पॉइंट एठी नोट करे आपको जे थ्रू आउट भगवत गीता विल फाइंड दिस वर्ड माम स्ट्रेस्ड भगवत गीता हम देखिए माम शब्दटा बहुत जगह रे यूसेज माम माने अनटू मी माने मते meaning unto Krishna but there are many miscreants who are interpreting this mam to mean everyone clearly mam माने unto me unto Krishna निजे कृष्ण कहउछन किंतु लोक माने कहबे एटा माने everyone so when I say bring me a glass of water does it mean that I want you to bring everyone a glass of water the individuality is there but by jugglery of words they interpret me or I to mean everyone consequently when Krishna says I the miscreants identify this I with themselves this is a gross misinterpretation although Bhagavad Gita is very popular in the world due to this misinterpretation by mundane scholars it has not been properly understood तो मुख्य कारण एटी प्रॉपर बहुत सुंदर भार बुझेले जे मुख्य कारण काहे की जणे माने बुझी पारनी काहे की जणे भगवत गीता रे एसेंस को ग्रहण करि पारनी बिकॉज़ से ये जो माम शब्दटा कृष्ण कहउछन मते से भाउछ एटा ता निजो से माम टा कहउछि कृष्ण एठी समस्त को कहउछन समस्त को रेफर कहउछन समस्त भीतर अंतर को कहउछन तो प्रभुपाद एटी एग्जांपल देले जे जदि मु कहउछि गोटे ग्लास टे आनो मो पाखु पानी तो त माने को समस्त को पानी हम कहली ना तो एभली भाबरे जो माने माने अज्ञानी व्यक्ति बा मंडेन स्कॉलर्स जो माने भौतिकवादी तो से माने एगुडी को से माने बहुत भगवत गीता बुझिया रे अक्षम एथि में तो कौन सॉल्यूशन कौन Bhagavad Gita clearly explains that this Chaturvarnam system was established by Krishna, but he is outside of this system.
तस्य अकर्तारम अपि विद्धि माम। से कहते मु जदियो एटा तयारी करछि किंतु मु ए सिस्टम रो परे माने के कोइ परियन जे कृष्ण कोन वैश्य ना ना कृष्ण जट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रो परे। When Krishna comes as an incarnation, he does not come as a member of any social order, not as a Brahman or anything else. When Krishna came, he came as the son of Devaki and Vasudeva. Vasudeva belonged to the royal family and therefore was a Kshatriya. As such, Krishna played the part of Kshatriya, but this does not mean that Krishna belonged to Kshatriya class. There are many incarnations of Krishna in many forms of life. In one incarnation, he appeared as a fish. It one मन पड़ला कृष्ण क्षत्रिय कुलर जन्म किंतु से क्षत्रिय थरे प्रभुपाद अफ्रिका रे थिले एवं हिजन भक्ति तीर्थ महाराज सेठी अछंती प्रचार रे एवं प्रभुपाद से देखि की माने से एक्चुअली देखि थिले आगुरु जे भक्त माने नीचे दृष्टि देखुचंती जेतोल कागो बाहर रो देखुचंती माने गोटे आम भीतर गोटे थाए ना ओ ये आम गाँव रो ये आमर ओडिया भक्त ये हिंदी भक्त ये इंग्लिश भक्त ये आम कंट्री रो एई आत्मीयटा तो खराब नुह भक्त मान सहित किंतु एई लेवल रे रहियाटा खराब एई स्टेज रे रहिबाटा खराब जे केवल ये ओडिया भक्त हेले मु यार क्लोज हे एटा भूल है ना कारण भक्त से कोन ओडिया लैंग्वेज जानछि बोली खाली कोन से सेति पे हम सहित संग जेहेतु से कृष्ण भक्त सेति हम सहित संग हम था संग है ना तो से देखिले जे मु ओडिया माने सॉरी भक्ति तीर्थ महाराज कहले मु ब्लैक ब्लैक अमेरिकन अन्य माने सब व्हाइट बॉडी रे कलर तांगर व्हाइट तो सेति पई मो मते समान सब नीचे दृष्टि देखुछ तो प्रभुपाद को से भाबितले से प्रभुपाद को कंप्लेन करिया को जाइथिले से जा तापरे जा बियो प्रभुपाद क्लास दोछन तो जेतोल से फर्स्ट कंप्लेन देले तो प्रभुपाद तां कहले जे देखो से माने तो तुमको देखुछन ए दृष्टि किंतु तमे अफेक्ट होछ माने तुमे मध्य ए बॉडीली कॉन्शियसनेस रे अछ जेहेतु से अफेक्ट होछन कारण से खराब भावुछन ना से भावुछन जे मते काई माने एभଳି देखुछन है ना तो सेथे ता मन रे ओटे एभଳି द्वंद्व रह जाइथिला जे भक्त माने एभଳି काई देखुछन तापर सेटा प्रॉपर क्लियर करले जे तुमे से लेवल रे जदी थांतो त तुमे एटा फील कर पाते जेहेतु तुमे नीचे लेवल रे अछ तुमे एटा फील करछ ना तुमे अफेक्ट होछ तापरे प्रॉपर क्लास दोतले तो कॉमन क्लास टा प्रॉपर सेट कहले जे कृष्ण इज आल्सो ब्लैक तो समस्त खुशी है अफ्रीकन मन सब ताली मारे लाइक जे कृष्ण कला हम भली कला तापरे प्रभुपाद किछ समय पर कहले बट नॉट लाइक यू प्रभुपाद कहया माने जे कृष्ण कला किंतु ता माने या नो जे भावनी जे कृष्ण तम मान भीतर जण कि कृष्ण माने कृष्ण कला कहिला माने जे तमे भाबियो जे कृष्ण हमर हे गेले ना आमे एठी कृष्णकर प्रॉपर्टीज को मान कृष्णकर बॉडीली फीचर्स को आमे बुझौ जे ता माने या नो जे आमे कहू जे कृष्ण ब्लैक माने तुम मान को भीतर जण तो सेहि प्रभुपाद काहे के एबेले कहना प्रभुपाद कहयो there are many incarnations of Krishna in many forms of life. In one incarnation, he appeared as a fish, as a member of community of fishes, but this does not mean that he is a fish. Prabhupada Meena avatar, Krishna Meena avatar hele tamane anu je Keshavadita Meena Sarira Jai Jagdish Sari. Tamane anu je siye jane macho. जो भी माछो को देखियो आपण कहबे से कृष्ण ना if we think upon seeing a fish that it belongs to Krishna's family we are mistaken clearly it Prabhupada. Of course from another point of view everything is Krishna but Krishna is alpha of everything सब कृष्णकर जिंस किंतु कृष्ण से जिंस भीतर नाहंती ताको रिलेशन नाही से जिंस सहित this is transcendental nature of Krishna and if we understand it we'll be liberated from birth and death कृष्णकर एई जिंस ताको कार्यकलाप को जदि हम बुझी जिवा जे या केवल दिव्य ताले हम जन्म मृत्यु चक्र रु बाहर जिवा कहै ना कृष्ण जे एटा को तत्व रे बुझी जिवो
मो जन्म एवं मो कर्म जे दिव्य ताल से जगत रु उद्धार सिंपल न कि कृष्ण माछ परिवार जन्म बोली आम कौन कह प्रत्येक माछ को कृष्ण बोली ना कृष्ण माछ भितर कृष्ण अच्छा परमात्मा रूप किंतु तामाने या नुह जे प्रत्येक माछ है कृष्ण सहित समान ना although Krishna has established the four divisions of human society he is not in any of them तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्. As soon as we understand that although Krishna was born into a Kshatriya family, he is not a Kshatriya, we actually become liberated. If we think that because Krishna acts in a particular way, as on the battlefield, he gave instruction to Arjun to fight, he is bound by the reactions of his activities, we are mistaken. कृष्ण भी एभली युद्ध करथले युद्ध क्षेत्र रे अछंती अर्जुन सहित ताकू गाइड करछंती ताल ताकू मध्ये रिएक्शन मिलियो ना तले ना कोई भगवान न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा तो कृष्ण एटी कहउछन भगवत गीता रे जे मोर किछि कर्म फल भोग करे नथाय. In conclusion, we must accept the fact that Krishna comes as any of us. He is not in actuality one of us. He is transcendental. तो जदियो कृष्ण कहार गोटे रूप नहीं कि आसंती तामाने या भाबिया था नहीं जे कृष्ण सही सहित समान है कारण सी तारो this fact we must learn by submissive inquiry from authoritative sources such as Bhagavad Gita or a spiritual master who is fully realized in Krishna consciousness. कहते ये जिनसा हम जानिया कहले भगवत गीता बा हमर गुरुदेवंकर बा जने तत्वविद गुरुकर आश्रय रही कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करिया गीता अछि चैप्टर ओके गुटे पेज अछि पढ़ दो Today, all facets of human society are thinking that their self-interest is in maintaining this body. Consequently, today's society is simply a society of cats, dogs, and dogs. From Vedic literatures, we can understand that we don't have to work hard all day simply to maintain this body. We are working very hard because we are trying to control material nature for the purpose of sense gratification. One who can come to understand that Krishna is the root of everything, the origin of everything, can understand the meaning of Ishvara Parama Krishna. Krishna is the supreme controller. In the universe, there are many Ishvaras are controlled, but Krishna is the supreme amongst all of them. Krishna consciousness gives us this knowledge. Without it, we will remain ignorant of our real self-interest. ये जिनसटा हमर निहाती जानिया जरूरी जे कृष्ण कर कोनसी बा कृष्ण हेले समस्त मध्य रे सुप्रीम एवं सी ही समस्त जिनसर स्रोत ही इज द रूट. Modern society is in dire need of intellectual persons or brahmanas who can broadcast real spiritual knowledge all over the world. प्रभात कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी रे बहुत सारा ब्राह्मण मानकर जरूरत रही. That is an absolute necessity for a society which is working hard simply to exploit nature. जो माने एभली नेचर को एक्सप्लॉइट केवल करछन ताको पई मध्ये एभली टीचिंग रा आवश्यकता अछि. If people try to understand Krishna consciousness movement scientifically and philosophically with their best knowledge and judgment and try to cooperate, there will be peace all over the world. जदि हम समझते ए मूवमेंट को ग्रहण करिकी बेस्ट एबिलिटी पर्यंत हम प्रैक्टिस करियो कोऑपरेट करियो परस्पर से ताले सारा जगत रे शांति एस्टैब्लिश हे करियो. In essence, the method is केमति करिवा very simple. We only need to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and follow the four regulative principles mentioned before
By following the regulative principles, we will be avoiding the 4 pillars of sinful life. And by chanting the Hare Krishna mantra, we'll be associating with God constantly. Thus, there will be peace among all classes of men. तो এইভাবে আমরা simple formula Prabhupada দিলে যে just by chanting this Maha Mantra, following the regulative principles, we can make a peaceful society. We can cooperate with each other because we will have our common practices. तो এইভাবে আমরা cooperation টা ହେଇପାରିବ। Srila Prabhupada की जय। तार किछि comments বা questions? Okay, ठीक ଅଛି, जय श्री प्रभुपाद।